Good morning, students, and welcome to our YouTube channel, Gnan Manjari Modern School. So, in the previous videos, we are just going through the chapter number 5, that is force and works. So, in the previous video, we were just talking about the machines. In that, we have just classified the simple machines. In that, we have seen the lever, pulley. Okay, this both things we have seen. So, first of all, what is lever? We have seen that. So if there is a stone over here and if we just have to move that stone, then what we do, we just put here and we apply effort over here. It is a bar, that is known as the pivot, and here it is the load, load, pivot and effort. So due to this, the stone will move aside. In some of the construction side, this is used. And then after, we have seen a pulley. So what is pulley? Pulley is a rounded shape, and on that it is just there in the well. It helps to just take out the water from the well. So let us see it. So first of all, lever, that is, a lever is used to move or lift heavy things. It consists of a bar resting on a fixed point called the pivot. The force is applied at one end of the bar and it is called effort. The weight that is shifted or moved is called the load. We cannot move or dislodge a heavy stone. You may have seen construction workers on the road using a lever to lift up the stone. Then after, pulley. Pulley consists of a wheel with a rope or cord passing over it. Pulleys have been in use for centuries. Wells were there from very early times, and pulleys were used to lift water from the well. Well have a single fixed pulley well. A movable pulley can have two or more wheels. Now, here we have just reached to the inclined plane. So let us see what is inclined plane. Inclined plane inclined plane. So let us see about it. So human being realized that it was easier to push or pull a heavy object up a slope to height instead of lifting the straight up. Did you know the pyramids of Egypt were built with huge blocks of stones weighing several tons? There were no cranes and no lifts to carry up the stones. The worker pushed or pulled the stones up inclined plane. The 60-meter high Shikhara of the Brijeshwara temple in Thanjavur, Tamil Nadu is topped by a massive dome. This dome too had to be pushed or pulled up in an inclined plane. Inclined plane is a flat sloping surface. You would notice that it is easier to climb up a gradual slope rather than a step slope. In same way, it is easier to push a heavy object up in a gradual inclined plane. That is how stones were pushed to build the pyramids of Egypt. In hospitals, stretchers and wheelchairs are pushed in a ramp if it is not possible to use the lift. The ramps have a gentle incline. So here we are talking about the inclined plane. तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई अगर आपको मैं बोलूँ कि एक स्ट्रेट पाथ है, बराबर है, तो वहाँ स्टेप्स है, तो अगर हमको कोई भी हैवी चीज स्टेप्स में इजी रहेगी चढ़ाने को या प्लेन रहेगा, मतलब एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन आप देखो कि ऐसा एक प्लेन होगा तो इसमें आप धक्का मार के इजीली चढ़ा सकते हो,
कि यहाँ पे अगर स्टेप्स हो तो आप इजीली चढ़ा सकते हो। तो मैं बोलूंगा कि जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, उसमें आप इजीली कोई भी चीज, हैवी चीज है, उसको आप चढ़ा सकते हो। दैट इज व्हाट इट इज, द इंक्लाइंड प्लेन। व्हाट इट इज? इट इज द इंक्लाइंड प्लेन. That is a slope on it, and all due to the push and pull, it just move further. Okay, so the people which are at forward, they pull it, and the people who are at back, they are just push it, so it, the heavy object will move, okay, upside. So here we can write some few points from it that are. So here first we can write an inclined plane, that is an inclined plane is a flat sloping surface. Sloping surface. Okay, so they have just explained that how it is used. So the another point which we can write in this, it is you would have noticed that it is easier to climb up a gradual slope rather than a steep slope. So these are the two main points in which we can just discuss about the inclined plane. Okay, so here what is an inclined plane? First of all, I will say that the inclined plane is a flat sloping surface. मतलब कैसा? A flat top like this. It is a surface, so we can easily push or pull on it, and the heavy object can just move upside. Okay, second is you would have noticed that it is easier to climb up a gradual slope rather than a steep slope. तो हम जो स्लोप होता है ऐसा, इससे भी बड़ा स्लोप हो अगर ऐसा डायरेक्ट, तो हम लोग इसको नहीं चढ़ सकते, बट वी कैन इजीली क्लाइंब अप दिस स्लोप रेदर देन दिस वन. ओके, बहुत बड़ा स्लोप हो तो हम क्लाइंब नहीं कर सकते, बट ऐसा 45 डिग्री वाला स्लोप है तो वी कैन इजीली क्लाइंब अप. So this is all about the inclined plane. So please write down this, and I am just giving you some time, then after we will move further.
Okay students, have you written down this? Now we will just move forward. So here there is a wheel. So let us talk about it. So here wheel. Wheel. So here the wheel was one of the greatest invention of early human beings. Cars, buses, bicycles and most mode of transport run on the wheels. Planes land on wheels. Even ships have wheels in their engines, machinery. For travel, we now use structurally suitcase wheels that can be pushed or pulled. For travel, wheels that have teeth and inner lock with other wheels are called gears. When the gears are engaged, they can do different types of works. Cars have different gears for different speed. So here we just talking about the wheel. So here they are just saying that wheel is one of the greatest invention. Wheel is one of the greatest invention by the early human being. ठीक है सो दैट इज द विल ओके तो विल है विच इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन अगर हमारा टायर इस सर्कल की जगह ये व्हील है ऐसा सर्कल नहीं होता और आप सपोज करो कि ये व्हील है इट इज ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ स्क्वायर और ऑफ अ रेक्टेंगल अगर ऐसा व्हील होता तो हमारी गाड़ियां हमारे स्कूटर साइकिल ये चलते नहीं चलते ठीक है सो द व्हील इट इज ऑफ सर्कल व्हाई बिकॉज इट हैज द मिनिमम force and minimum just we can say stress on it because it is divided equally in all side okay so wheel was the one of the greatest invention by the human beings early human beings so wheel is very useful nowadays how so we have just seen all these transport modes like if I just say the scooter, bicycle, these bikes, then after cars, trucks, aeroplanes. This all the things have the wheels, okay, and they are just saying that the wheels which have the teeth and interlock, they are known as the gears. तो अभी gears क्या है? Let us see that. ओके गियर्स क्या है सो गियर्स आर लाइक दिस there is a teeth over here like this there are teeth over here okay then after it is connected with other wheel and interlocked each other okay so here there will be teeth here there will be teeth here then after okay so these teeth are interconnected with each other if one will just move then other if I just move this one then this will also move towards this side this will I will just move this side and it will just move on this side okay students so here what will happen there are we have seen we have just heard the gap the word gap so how हमने कब सुना है word gap तो I will say that
in the scooter, in the cars, that we have just see the gears. हाँ, तो हमने कार की बात करें तो डिफरेंट गियर्स आर देयर। आपके पापा है, बराबर है, तो उसके पास कार होगी, तो वो लोग अगर आप कहीं घूमने गए हो तो आपके पापा जब पिक करते हैं गाड़ी, मतलब एक जहाँ घर से स्टार्ट करते हैं तो पहले फर्स्ट गियर में डालते हैं, उसके बाद थोड़ी सी चला के स्पीड पकड़ा के सेकंड गियर, देन आफ्टर थोड़ी और स्पीड पकड़ा के थर्ड गियर, देन आफ्टर उसकी थोड़ी और स्पीड बढ़ा के फोर्थ गियर, देन आफ्टर थोड़ी और स्पीड बढ़ा के फिफ्थ गियर। ओके, सो डिफरेंट गियर्स। अगर पापा को गाड़ी रिवर्स लेनी है तो वहां पे रिवर्स गियर भी आता है, वो फिफ्थ गियर के नीचे आता है, तो क्या करते हैं कि भाई रिवर्स गियर आता है, ठीक है। तो उसी तरह गियर्स के कार्स में डिफरेंट स्पीड के लिए डिफरेंट गियर्स हैं। अगर आप फर्स्ट गियर पे गाड़ी रखे हो, बराबर, और आप 50 60 70 की स्पीड में जा रहे हो तो उतनी गाड़ी नहीं चलेगी। सेकंड गियर पे भी उतनी नहीं चलेगी। थर्ड फोर्थ गियर तक वो 70 80 तक चलेगी गाड़ी, ठीक है। फिर आफ्टर वी हैव टू जस्ट डू द फिफ्थ gear on the car because the engine will have load. So what will happen, the engine just it will be harm if we just don't shift the gear up or down. अगर हम फिफ्थ गियर पे 20 की स्पीड में चलेंगे तो इंजन को बहुत प्रॉब्लम होगी, दिक्कत आएगा, इसलिए हमको उसमें सेकंड या फर्स्ट गियर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंजन को दिक्कत ना आए और गाड़ी स्मूथली चले, वरना गाड़ी स्मूथली चलेगी नहीं। So gears are used in many places. Okay, so here again I am just reading the wheel. That is, the wheel was one of the greatest invention of the early human beings. Cars, buses, bicycles, and most mode of transport run on wheels. Plane land on wheels. Even ships have wheels in their engine and machinery. For travel, we now use trolley suitcase on wheels that can be pushed or pulled. For travel, now we use trolley suitcase on wheels that can be pushed or pulled. Then after, wheels that have teeth and interlocked with other wheels are called the gears. When the gears are engaged, they can do different types of works. Cars have different gears for different speeds. So different speed के लिए different gears है। Okay, now we will just move towards the screw. Let us see screw. तो screw तो आप सब ने देखा ही होगा, अपने घर पे आसपास सभी जगह screw होता ही है। So let us see about the screw. It is also simple machine. Let us see. So screw so here we can write a screw is really a kind of inclined plane. Then after, if you follow the curved line going up, it goes up at
an angle, at an angle, it is an inclined plane. Okay. Screws are used to hold or join things together. Okay. So let us learn about the screw. Let us see what is screw. So here a screw is a really kind of inclined plane. तो अभी inclined plane की बात करें तो screw आपने देखा होगा, उसमें अंदर क्या होता है कि भाई अगर मैं screw I can draw the perfect screw, but अगर ऐसा कुछ हो उसके अंदर यहाँ से ऐसा ऐसा इंक्लाइंड होता है, ठीक है, ऐसा इंक्लाइंड होता है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ स्क्रू. तो क्या होगा, यहाँ नीचे से गुड़ 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 फर के ऊपर तक एक इंक्लाइंड जैसा होगा. कैसा? अ काइंड ऑफ स्लोप. सो उससे क्या होगा, हम ऐसे ऐसे उसको घुमाएंगे, देन इट विल जस्ट मूव इनसाइड इनसाइड एंड इनसाइड. तो आगे होता है ना वो बहुत थिन होता है, उसके बाद बड़ा बड़ा होता जाता है. क्यों? क्योंकि जो नुकीली चीज है वो जल्दी अंदर जाती है, तो उसके बाद हम लोग ऐसे उसको फेरते रहेंगे तो क्या होगा, वो अंदर चला जाएगा. ठीक है. सो दैट इज द स्क्रू. इट इज अ काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. ओके. देन आफ्टर इफ यू फॉलो the curved line going up, it goes up at an angle, it is an inclined plane. तो अगर हम उसको जस्ट कर्व्ड लाइन के अंदर वो होता है, अगर उस लाइन को फॉलो करते जाए तो इट इज अ काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, वो ऊपर 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 जाते ही रहेगा. ठीक है. अगर नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को स्क्रू मिलेगा देन आई विल ब्रिंग दैट स्क्रू. ओके स्टूडेंट, अभी तो यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा है स्क्रू, बट आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द स्क्रू. ओके. चलो. Here next is screws are used to hold or join things together. तो screw है वो कहाँ पे यूज होता है? तो screw की बात करें तो screws are used to join or to hold the things together. तो अभी ये बोर्ड की बात करूं तो ये बोर्ड है वो भी स्क्रू से ज्वाइंट हुआ है. यहाँ पे ये स्क्रू है तो उसको स्क्रू को फिट किया हुआ है ताकि ये बोर्ड हिले नहीं. यहाँ ऊपर भी स्क्रू है, वहां पे भी है, वहां पे भी है. ठीक है. तो यहाँ पे कितना स्क्रू है बता? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रू से ये पूरा बोर्ड जो है पीछे का मेरा वो होल्ड हुआ है, मतलब वहां ज्वाइन हुआ है. किससे? वॉल के साथ. so that we can now we are studying over here and I am just writing on the board. Okay. Then after moving further, so here it is the wedge, but the wedge we will see in the next video. So we just keep up to here, and so let us see what we have seen in this video. So सबसे पहले हमने देखा क्या? हमने देखा inclined प्लेन. तो इंक्लाइंड प्लेन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ स्लोप, बट बहुत बड़ा स्लोप नहीं और बहुत छोटा स्लोप भी नहीं, एक मीडियम साइज का स्लोप. इसमें से क्या होगा, ड्यू टू दिस जो ओवरवेट चीजें होती है उसको हम इजीली ऊपर चढ़ा सके इसलिए. तो वो आपको कहाँ दिखने को मिलेगी? तो आप हॉस्पिटल में जाओ या कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो वहाँ बाजू में एक ढाल जैसा होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ से स्ट्रेचर ले जा सकता है, बाद में जो व्हीलचेयर है उसको भी ले जा सकते हैं. ओके. देन आफ्टर वी हैव सीन द व्हील. तो व्हील क्या है? जो व्हील है वो बहुत बड़ा इन्वेंशन है इन द बाय द ह्यूमन. कैसा है? सर्कल जैसा. अगर कोई दूसरा शेप होता तो हमको ऐसा ग्रिप आता. अगर आप सोचो कि आपका गाड़ी का व्हील गोल नहीं है,
कोई और शेप का है तो आपको कैसा लगेगा, झटका लगेगा, ठीक है, झटका लगता ही रहेगा, लगता ही रहेगा, लगता ही रहेगा। उसके बाद हमने देखा स्क्रू। तो स्क्रू क्या है, क्योंकि स्क्रू है इट इज अ टाइप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ओनली, ओके, इट इज अ टाइप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एंड इट इज यूज्ड टू होल्ड और जॉइन थिंग्स टुगेदर, okay. So now I am just writing your homework, okay, so please just send the homework to your respective group. So here in your homework you have to write down what is inclined plane, then after what it was wheel, screw, okay. What is inclined plane, wheel and screw by your own? Just what things you just get in your mind, you have to write that and submit in your respective group. Okay students, we'll meet in the next video. Please write down your homework.